Hello, boys and girls. Today we are going to do direct indirect interrogative sentences type 2. अब मेरी लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप 1 सेंटेंसेस करवाए थे. टाइप 1 सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें दिखाया था, समझाया था कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं. इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं 5 फ्रेंड्स, इज, वाज, आर, वेयर, एम. 3H has, have had. 3Ds do, does, did. 3 partners can, could, shall, should, will, would. तो अगर तुम्हारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दोज sentences they come under type 1. And what are type 2 sentences? Type 2 sentences, interrogative sentences, वो sentences होते हैं जो WH word से start होते हैं. Now, which are the WH words in English? When, what, which, whom, why. How is also a WH word in English. तो अगर तुम्हारा interrogative sentence exam में how से start होता है, then also you have to consider that sentence under type 2. That's not type 1, that is type 2, because how is also a WH word. Where, whose, whom, ये सारे WH words है English में. तो टाइप 2 सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कब होता है? जब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. तो हमें टाइप 2 वाला फॉर्मूला उन सेंटेंसेस में अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल देखो, व्हेन विल यू विजिट अस. नाउ दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच इज स्टार्टिंग विद WH वर्ड. दिस सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद व्हेन विल यू विजिट अस. व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, इट इज टाइप 2 सेंटेंस. व्हाट इज योर नेम, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, इट इज टाइप 2 सेंटेंस. तो एग्जाम में तुम्हें अपना इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पढ़ना है, एंड देन यू पीपल हैव टू डिसाइड वेदर इट इज टाइप 1 और टाइप 2. सो अगर एग्जाम में टाइप 2 सेंटेंसेस आते हैं, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फर्स्ट कम्स द फर्स्ट स्पीकर. नाउ मैंने तुम्हें समझाया है फर्स्ट स्पीकर क्या होता है. फर्स्ट स्पीकर वो होता है जो सेंटेंस को बोलता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब विल बी कन्वर्टेड इनटू आस्क्ड. तो सेड का हो जाएगा आस्क्ड. देन वी कम टू सेकेंड स्पीकर. अब मैंने तुम्हें हर वीडियो में यही सिखाया है कि अगर एग्जाम में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा सेकेंड स्पीकर ऐड करते हैं. हम किसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वी हैव टू मेंशन द नेम और द प्रोनाउन रिलेटेड टू दैट पर्सन. Now, after changing said into asked, you always have to add a second speaker. Second speaker हम हमेशा interrogative sentences में add करेंगे. Whether it's type 1 or type 2, you have to add a second speaker in an interrogative sentence. Second speaker वो होता है जो sentence को सुन रहा है. So second speaker हम हमेशा interrogative में add करेंगे. उसके बाद boys and girls, टाइप 1 सेंटेंसेस में तुम इफ और वेदर यूज करते हो. अगर टाइप 2 सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं तो हम WH वर्ड कॉपी करेंगे. अब अगर क्वेश्चन में व्हेन दिया है, आंसर में व्हेन कॉपी करो. अगर क्वेश्चन में हाउ दिया है, आंसर में हाउ कॉपी करो. अगर क्वेश्चन में हु दिया है, यू हैव टू कॉपी हु इन योर आंसर. दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग इफ ऑफ वेदर, you have to copy the WH word. Whatever WH word is given in the question, that needs to be copied in the answer. So this is a very very important step, and this is the only difference between type 1 and type 2. तो एग्जाम में अगर type 1 आता है तो if और whether यूज करना है. अगर एग्जाम में type 2 आता है, then you people have to copy the WH word. ठीक है. एंड देन स्टेप नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में भी बोला था स्टेप नंबर 5 स्किप नहीं होना चाहिए. स्टेप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेप नंबर 5 ये कहता है कि अपना सब्जेक्ट ढूंढो और सब्जेक्ट को सेंटेंस में आगे लेके आओ. यू ऑलवेज हैव टू ब्रिंग द सब्जेक्ट टू द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस. अगर ये स्टेप स्किप हो गया, मार्क्स विल बी कट. सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. देन यू पीपल नो प्रेजेंट टेंस का तुम्हें करना है पास्ट टेंस. अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में दिया है, यू हैव टू कन्वर्ट पास्ट टेंस इनटू पास्ट पार्टिसिपल. नाउ हाउ टू कन्वर्ट पास्ट इनटू पास्ट पार्टिसिपल? सिंपली बाय एडिंग हैड. देन यू हैव टू चेंज द प्रोनाउंस. प्रोनाउंस मतलब अगर क्वेश्चन में आई दिया है, आंसर में मी कर दो. अगर क्वेश्चन में ही दिया है, आंसर में हिम कर दो.
अगर क्वेश्चन में शी दिया है आंसर में हर कर दो। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन में वी दिया है तो आंसर में वी का कर दो दे। So these are the steps you people need to follow if in the exam you are given type 2 interrogative sentences. That is, if your interrogative sentence is starting with a WH word, you have to simply copy the WH word. Whatever WH word is given in the question, you have to copy that in your answer sheet. I hope तुम्हें ये सारे स्टेप समझ आ गए और तुम्हें ये भी समझ आ गया कि टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है। टाइप 1 में हम इफ वेदर यूज करते हैं, दैट यू कैन सी इन वीडियो नंबर 3, एंड टाइप 2 में we have to copy the WH1 which is given in the question. Now these are some examples. For example, one question one says she said why are you late. So she said का हो जाएगा asked. अब उसने किसको क्वेश्चन पूछा है, ऑलवेज एड योर सेकेंड स्पीकर. सो शी आस्क्ड हिम, इधर मैंने हिम यूज किया है. यू पीपल कैन add her also, you people can add them also. So she asked him. अब इसमें if और whether नहीं आएगा, क्वेश्चन में why दिया है, I have to copy why in my answer. So she asked him why. Bring your subject to the bring your subject in front. So इसमें subject क्या है, you. अब मैंने तुम्हें बताया है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी यू नहीं यूज करते. यू की जगह हम हमेशा सेकेंड स्पीकर यूज करते हैं. इधर मैंने सेकेंड स्पीकर हिम यूज किया है, तो हिम का हो जाएगा ही. सो शी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट. अब व्हाई ही आर का पास्ट टेंस वर होता है, पर ही इज सिंगुलर, तो तुम्हें क्या करना है, was. So why he was late. She said, what is the cost of gold? She asked him, or she asked her, or she asked them. What के बाद subject. The cost of gold is your subject. So what? The cost of gold इसका हो जाएगा was, and then full stop. You have to remove the double inverted commas. You have to remove the question mark. She said, where have you kept my book? She asked him where he have का हो जाएगा had kept my book, नहीं, her book. And then remove the question mark, remove the inverted commas. They said, how will you cross the river? So they asked him how he will का हो जाएगा would cross the river. अब अगर तुम्हें क्वेश्चन है कि क्रॉस का क्रॉस्ड क्यों नहीं हुआ, सो द आंसर इज, if in a sentence we are using can could shall should will would, whatever main finite verb is coming after can could shall should will would needs to be in present tense. ये मैंने तुम्हें verbs वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है. डिड के बाद प्रेजेंट टेंस आता है, कैन कुड शैल शुड विल वुड के बाद प्रेजेंट टेंस आता है, टू के बाद भी हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सेड व्हिच बुक इज मोर इंटरेस्टिंग. दे आस्क्ड हिम व्हिच बुक, इसका हो जाएगा वाज मोर इंटरेस्टिंग. So this is the way, boys and girls, you have to convert interrogative sentences into indirect speech if the interrogative sentences are starting with WH word. अब ये एक्सरसाइज है. दिस इज एन एक्सरसाइज ऑफ 10 क्वेश्चंस. ऑनेस्टली ये 10 क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में सॉल्व करो. इसको पॉज करो वीडियो को एंड सॉल्व ऑल द 10 क्वेश्चंस. And at the end of the video, I have given the answers also. So your duty is to solve all these questions and then check कि तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है. अगर तुम्हारे 10 क्वेश्चंस करेक्ट है, दैट मीन्स तुम्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ गए हैं. Now interrogative sentence, I am repeating again, they are very very important. गुजरात बोर्ड CBSE में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टीचर के फेवरेट होते हैं. टाइप 1 के आने के ज्यादा चांसेस होते हैं कंपेयर टू टाइप 2, बिकॉज टाइप 2 इज इजियर. टाइप 1 में यू हैव टू रिमेंबर दैट वी कैन नॉट यूज दैट, वी हैव टू यूज इफ और वेदर. तो उधर स्टूडेंट्स के मार्क्स कट होते हैं. दैट्स व्हाई टीचर्स they like asking type 1 sentences. So
इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी के क्वेश्चंस तुम खुद से करो एंड देन जस्ट चेक योर आंसर्स with the answers I have given here on the last slide. So they said, when will the train arrive? So they asked me, or they asked her, or they asked them, when. अब तुम लोग क्या करते हो गलती, विल का हो जाएगा वुड द ट्रेन अराइव लिख के आओगे एग्जाम में एंड यू विल गेट अ जीरो. यू हैव टू रिमेम्बर दैट दे आस्क्ड हिम, व्हेन के बाद सब्जेक्ट आता है. अब इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रेन विल कम इन द फ्रंट ऑफ दिस सेंटेंस. सो दे आस्क्ड हिम व्हेन द ट्रेन वुड अराइव. When would the train arrive is wrong. When the train would arrive is the correct answer. That's why I always tell you people that step number 5 is very very important. Step number 5 में बहुत students mistake करते हैं, तो तुम्हें वो बहुत केयरफुली सॉल्व करना है. सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए. टेंस देखो, प्रेजेंट टेंस है तो उसका पास्ट टेंस करो, पास्ट टेंस दिया है तो उसका पास्ट पार्टिसिपल करो, रिपोर्टिंग वर्ब्स को चेंज करो, ऑलवेज ऐड सेकंड स्पीकर wherever it is necessary, remove all the punctuation marks and then you will get full marks. Okay, I hope तुम्हें type 2 sentences समझ आ गए. Now in the next video we are going to do order and request. Order and request are also very very easy compared to interrogative sentences. ऑर्डर और रिक्वेस्ट आ सकते हैं एग्जाम में, पर इंटेरोगेटिव आर मोर इम्पोर्टेंट. आई होप you like this video, you understood all the important rules of converting direct into indirect in case of interrogative sentences. Please like my video, please subscribe to my channel. Thank you.